Myself, Dr. Balram Chauhan, lecturer mathematics, Government Polytechnic Lucknow. We have discussed here plane and sphere in the 3 dimension. And it holds for every student of diploma holders in UP. We have discussed here plane and spheres. Plane in the plane, first of all definition of the plane. Taking any 2 points on the surface, joining these 2 points, the line lies in that plane or that surface is called plane. दूसरी भाषा में आप सुन सकते हैं कि यदि कोई दो बिंदु किसी सतह पर लेते हैं और उनको किसी एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, जैसे ये कोई 2 पॉइंट्स हैं, दिस इज एनी प्लेन, हियर वन पॉइंट इज ए, another point is B. We take any 2 points, then they are joining these 2 lines. This line AB lies in the plane points A and B. Means A और B जिस सतह में स्थिर थे, जब A और B को दोनों को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद दोनों लाइन फिर उसी में आ रही हैं, तो ऐसे तल को हम समतल कहते हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, ax plus by plus cz plus d equals to 0, where a, b, c, d are constant. Let us suppose any 2 points, जैसा कि परिभाषा में है कोई दो बिंदु लेते हैं तो P और Q कोई दो बिंदु लेते हैं जिसमें P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 हैं और Q बिंदु के निर्देशांक x2 y2 z2 हैं. तो हमने ये माना कि यह प्लेन का कोई इक्वेशन है और अगर इस पे कोई दो बिंदु लेते हैं तो यह दोनों बिंदु इस प्लेन को संतुष्ट करेगा. मीन्स in place of x y z be putting x1 y1 z1 and x2 y2 z2, we get ax1 plus by1 plus cz1 plus d equals to 0. Similarly, ax2 plus by2 plus cz2 plus d equals to 0. Multiplying by k, k is any constant, multiplying by k in equation 3 here, this is multiplying by k and adding with 2, मीन्स इक्वेशन 3 में k से मल्टीप्लाई करने और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर हम ये प्राप्त करते हैं a इंटू x1 प्लस के x2 प्लस b y1 प्लस के y2 प्लस c इंटू z1 प्लस के z2 प्लस d इंटू 1 प्लस k. d is constant and 1 plus k is again constant. Then be dividing by 1 plus k, both side we have a into x1 plus k x2 upon 1 plus k plus b y1 plus k y2 upon 1 plus k plus c z1 plus k z2 upon 1 plus k plus d equals to 0, which is same as m ratio n इक्वेशन. m एंड रेशियो n में अभी इसके प्रीवियस में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई लाइन m अनुपात n में कट करती है तो उनके इस तरह से कट कर रहे हैं. ये इक्वेशन 4 एज इट इज है, ये है 1 रेशियो k में, व्हिच इज सेम एज, यही इक्वेशन 4 जो है वो इक्वेशन 1 के बिल्कुल क्लियर कट शो कर रहा है. कैसे? This is same represent as equation 1 which is 1 ratio k. Then the equation 1 जो हमने पहले माना था कि x plus by plus cz plus d equals to 0, वह इक्वेशन परिभाषा के अनुसार वो प्लेन को संतुष्ट करती है. मतलब कोई दो पॉइंट हमने लिया और वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, अगर वो दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट उसी प्लेन में स्थित होते हैं तो परिभाषा के अनुसार हम उसको ये कहते हैं कि ये जो दिया गया इक्वेशन था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, यह एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है. यदि d बराबर 0 है मीन्स वह प्लेन दैट प्लेन पासिंग थ्रू द
origin. In the normal form of the plane, Lx plus My plus Nz is equals to P. Putting the value of L, M, N, we get x cos alpha. We know L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta, and N is equals to cos gamma. Putting these value Lmn in that equation, we have x cos alpha plus y cos beta h plus z cos gamma is equals to P. This is the equation normal form of the plane. Equation of the plane through a given point x1 y1 z1. कोई बिंदु x1 y1 z1 दिया गया है, उस बिंदु से अगर ये प्लेन जा रही है तो उनकी क्या कंडीशन होगी. लेट अस सपोज द प्लेन ax plus by plus cz plus d is equals to 0. If it is passes through the point x1 y1 z1, then this point satisfies this equation, that is ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equals to 0. Subtracting equation 2 from equation 1, equation 1 से इसको घटा दिया गया. Then ax minus x1 plus by minus y1 plus c z minus z1 is equals to 0 is the condition passing through the point x1 y1 z1. This is required condition of the plane passing through the point x1 y1 z1. Similarly, if you are given 3 points, let us suppose one point is A, that having coordinate x1 y1 z1, B their coordinate is x2 y2 z2, and C their coordinate is x3 y3 z3, lies on the plane. Let us suppose the plane ax plus by plus cz plus d is equals to 0. If this plane passes through the points A, B, C, then following these conditions must be satisfied. That is ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equals to 0, ax2 plus by2 plus cz2 plus d is equals to 0, ax3 plus by3 plus cz3 plus d is equals to 0. अब हमारे पास ये 4 इक्वेशन हैं. इन 4 इक्वेशन में ए बी सी डी 4 अननोन हैं. चारों इक्वेशन की मदद से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक तरीका है बाय द एलिमिनेशन मेथड. उस एलिमिनेशन मेथड से 4 अज्ञात चीजों के 4 इक्वेशन दिए हैं, तो ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लें और इस इक्वेशन में रख दें तो वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होगा. अथवा दूसरा तरीका है eliminating small a b c d from equation 1 to 4, same way we get a determinant. This is the simplest way. X y z 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1. This is their determinant 4 cross 4, means this is the rows, these are row and this is a column. This is 4 cross 4 determinant. You know, identified 3 cross 3 determinant as a similar way. जैसे आप 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते थे, उसी तरह वही फार्मूला n क्रॉस n डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए लागू होता है. मीन्स फर्स्ट कंडीशन, you left these lines, rest all entries. Similarly, first plus, this is minus, this plus and minus. We draw this line left, we write x1 x2 x3 z1 z2 z3 1 1 1 and minus z x1 y x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1. Similarly, 1 is equals to 1 into plus minus plus फिर minus.
x1 y x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट हम पहले एक्सप्लेन करना जानते हैं 3 क्रॉस 3 को, उसी को फार्मूले को हम 4 क्रॉस 4 में एक्सपेंड कर सकते हैं, अथवा n क्रॉस n के डिटर्मिनेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है बट हियर 4 क्रॉस 4 का है, तो आप उसके तरह से एक्सपेंड करके इनकी वैल्यू को सरल कर सकते हैं। और सरल करने के बाद चूंकि ये एक्स वाई जेड प्लेन एक्सीज हैं और ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ये पहले से आपके पॉइंट्स दिए हैं, these are numerical value and this is the x y z। then after simplification we get in terms of equation x y z and constant as a similar way ax plus by plus cz plus d which is required condition of the plane passing through the given 3 points। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, चाहे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके कर सकें अथवा ये 4 क्रॉस 4 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिटर्मिनेंट यूजिंग टू फाइंड आउट द इजीएस्ट वे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल a b c एंड d, इसमें गलती होने के कम चांसेस हैं, इसको आप यूज करते हैं तो वह रिक्वायर्ड कंडीशन प्राप्त होती है जो कोई प्लेन दी हुई 3 बिंदुओं से होकर के गुजरती है तो उनकी क्या कंडीशन होगी। रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू द नॉर्मल फॉर्म। लेट अस सपोज ax कोई प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 1, दिस इज द जनरल फॉर्म एंड वी हैव टू डिस्कस इन द प्रीवियस केस in the normal form this is x cos alpha plus y cos beta plus n cos gamma equals to small p if p and d are greater than 0 means non negative, then equation 1 and equation 2 represents the same plane. One is a general equation of the general form of the plane and second is the normal form of the plane, but both lines both equations represent a same plane, therefore their coefficient must be identical. Now cos alpha coefficient of x, cos alpha ratio of cos alpha upon a, coefficient equals to coefficient of y cos beta upon b and cos gamma coefficient of z cos gamma upon c इक्वल्स टू माइनस पी। इसको जब लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस पी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन दैट केस माइनस पी हियर अपॉन डी पुटिंग द वैल्यू। अब इस कंडीशन में यू राइट हाउ मेनी इक्वेशंस, तो इस तरह की इक्वेशन लिखने के लिए टोटल नंबर ऑफ इक्वल साइन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द इक्वेशन। इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि कितने इक्वेशन लिखे गए हैं। इस तरह के आइडेंटिटीज में कहीं भी यू राइट दिस इज नंबर ऑफ इक्वल साइन, 3 नंबर ऑफ इक्वल साइंस गिव्स द 3 इक्वेशंस। नाउ squaring and taking their roots, squaring, adding and they are taking root sign, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma upon under root a square plus b square plus c square. Since L square plus m square plus n square is 1, putting the value here cos square alpha plus cos square beta cos square gamma is 1. In putting the value in place of 1, then we have 1 upon under root a square plus b square plus c square. Then we have to find from the equation after simplification, that is cos alpha upon a equals to 1 upon
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. In that case, putting the value p equals to minus d is cos alpha with negative sign minus a upon a square plus b square plus c square, and cos gamma equals to minus b upon a square plus b square plus c square, cos gamma equals to minus c upon a square plus b square plus c square, and p equals to, here we replace negative sign because this is equals to minus p upon d. So, this is the positive sign, then you take this is negative sign, because in the previous case we have discussed if all are positive then this negative, if this is negative, this is a positive, then all are negative. In that case, here we use that case, in that case minus 1, then we have to this, and cos beta minus b upon a square plus b square plus c square, cos gamma is माइनस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. प्लस माइनस में कहीं घबराने की जरूरत नहीं है. यदि उसको पी को माइनस साइन में लेते हैं तो ये सभी कास अल्फा कास बीटा कास गामा पॉजिटिव होंगे, और यदि उसको निगेटिव लेते हैं तो पी पॉजिटिव हो जाएगा. इन दैट केस स्मॉल पी इक्वल्स टू डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नोट इफ d इज निगेटिव, यदि d निगेटिव है तो चेंज द साइन. ये जो साइन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये अभी तक पॉजिटिव था, तो उस केस में इसको अगर इफ d इज लेस देन 0 देन दिस साइन विल बी निगेटिव. इन दैट केस intercepted form of the plane, intercepted form of the plane, let us suppose this is x axis, this is y axis, and this is z axis, here origin. X upon a plus y upon b plus z upon c is equals to 1. This is the equation of the plane intercepted form, means x अक्ष पर ये a डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है, y अक्ष पर b डिस्टेंस है और z अक्ष पर c डिस्टेंस है. इनके पॉइंट्स को आपस में मिला दें. दिस प्लेन इज इंटरसेप्टेड फॉर्म of the plane is x upon a plus y upon b plus z upon c is equals to 1. This is the equation of the plane. अब यहाँ आपको तीसरी तरह का इक्वेशन ऑफ द प्लेन बताया जा रहा है. पहला क्या था? जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0. नॉर्मल फॉर्म था एक्स कास अल्फा प्लस वाई कास बीटा प्लस जेड कास गामा इक्वल्स टू पी, दैट इज एल एक्स एल कास अल्फा plus m cos beta plus n cos gamma equals to small p, and in the intercepted form x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1. और इसका ये इस तरह से चित्र बनता है. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मान लेते हैं कि कोई दो प्लेन है, वो a1x plus b1y plus c1z plus d equals to 0 is a one plane. Second plane is x a2x plus b2y plus c2z plus d equals to 0, where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are direction ratios of the planes. Then their direction cosines, इनके डायरेक्शन कोसाइन x अक्ष के अकॉर्डिंग a1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, y अक्ष के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइन
B1 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square, ZHK accordingly C1 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square. Similarly दूसरी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन A2 upon under root A2 square plus B2 square plus C2 square, YH के अकॉर्डिंग B2 upon under root A2 square plus B2 square plus C2 square, ZH के अकॉर्डिंग C2 upon A2 square plus B2 square plus C2 square. Then cos theta is equals to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square into A2 square plus B2 square plus C2 square. Here two cases arise here same way. If theta is equals to 90 means दोनों प्लेन अगर एक प्लेन दूसरे पर परपेंडिकुलर है, in that case theta is equals to 90, that is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल्स टू 0 होगा. और अगर ये थीटा 0 है मीन्स यह प्लेन इसी प्लेन के पैरेलल अथवा कंसाइड कर रही है, इन दैट केस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. प्रीवियस कंडीशन इफ theta equals to 0 degree, then condition is holds A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. One simple question is to application of the this formulae, a plane whose centroid is ABC cut the axis at the point PQR, find the equation of the plane PQR. Let us suppose this is x axis, y axis and z axis. O, ABC are centroid of the plane and this plane cut in the line here P, here Q and here R, then joining these, this plane having centroid is small ABC. Let us write, let the equation of the plane in the intercepted form. Let us suppose A dash B dash C dash is any point having coordinate centroid x upon A dash plus y upon B dash plus z upon C dash equals to 1. Plane cut the axis at A dash 0 0 0, B dash 0 0 0, C dash. Then the centroid of triangle POQ equals to A dash plus 0 upon 3, 0 plus B dash plus 0 upon 3 plus 0 0 plus C dash upon 3. After simplification we get A dash plus B dash, A dash upon 3 plus B dash upon 3 plus C dash upon 3, because this is the centroid and we are given that their centroid is small b and C. Therefore, A is equals to A dash upon 3, simplifying A dash is equals to 3A, B is equals to B dash upon 3, B dash is equals to 3B, C is equals to C dash upon 3, C dash is equals to 3C. Putting these value in the previous equation, in this we get x upon 3a plus y upon 3b plus z upon 3c equals to 1. Now multiplying by 3 in both sides we have x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 3, which is required equation of the plane, which is required answer.
Second question is find out the angle between two planes. One is x minus 2y plus 3z equals to p is a one plane, 3x plus 2y minus z equals to 6 is another plane. Now comparing their coefficient, we have putting the value cos theta a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square a2 square plus b2 square plus c2 square. After simplification we get minus 2 upon 7. Therefore, theta is equals to, this is cos theta, therefore theta is equals to cos inverse minus 2 upon 7. Next is sphere. Their definition, a point moving in the space at a distance constant from a fixed point, the locus of that point is called a sphere. The equation of the sphere passing through the origin x minus 0 square x square plus y square plus g r z square, this is required r their point passing through the origin. If you take a point alpha beta gamma, then the equation x minus alpha whole square plus y minus beta whole square plus z minus gamma whole square equals to r square. Equation of the sphere passing through alpha beta gamma. Then after simplification, x square plus y square plus z square minus 2 alpha x minus 2 beta y to gamma z plus alpha square plus beta square plus gamma square minus r square equals to 0. Comparing alpha is equals to minus u, beta is equals to minus v, gamma is equals to minus w, their center taking alpha beta gamma, then alpha is equals to minus u, beta is equals to minus u, gamma is equals to minus w, putting the value, therefore this is equals to minus u minus v minus w. And their radius, here we take c is equals to alpha square plus beta square plus gamma square, therefore r square is equals to alpha square plus beta square plus gamma square minus c, therefore r is equals to under root alpha square plus beta square plus gamma square minus c, which is required equation of the sphere, and this is required equation formula of the center. To find out the equation of the sphere passing through the diameters, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 equals to 0. Question is find out the center and radius of the sphere. 3x square plus 3y square plus 3z square minus 6x minus 12y plus 6z plus 2 equals to 0, which is not given in the general form. Therefore, dividing by 3 we get this equation. Now comparing u b w, u is equals to minus 1, b is minus 2, w is c is this much. Their center minus u minus v minus w is this equation, and radius under root u square plus v square plus w square minus c, putting the value u b w we get, after simplification we get 4 upon root 3. That is all. Thank you.